Hello all, welcome to ClickATale. I am Deepmala and behind the camera there is Srivash. तो कैसे आप लोग? भालो तो? आज हम लोग निकल पड़े हैं another weekend trip पे from Bangalore and it is 300 kilometer from Bangalore और ये जगह कुछ खास है. कैसा है ये जगह? देखिए. There is no other human beings are there. टाइगर ऐसे खोज रहे हैं जैसे बकरी खोज रहे हैं. भाग मार्क. यही ऑन किया मैंने तो सामने टाइगर था. It's blood. ओहो. Where did you get that? 200 to 300 meters towards that direction. Watching deer from the window. ये टेम्पल almost 5,000 years old. This is so massive यार. तो इस बार हमारे साथ है 3 नए दोस्त, starting with the little one who Vishkas. Hi. And here is Nitika and Tejas. तिन्नी से बाद में मिलाएंगे. तिन्नी is sleeping now. So Tejas, this is our second trip together. Yes. So how do you feel about Mysore Road, Mysore Expressway? It was a great expressway. We enjoyed our drive from Bangalore to here. Started 5:30, reached within an hour. तो 1 घंटे में बैंगलोर से मैसूर पहुंचे हम लोग. इट इज़ फैंटास्टिक राइट. ये रोड तो मतलब मज़ा आ गया. Yeah. Just to be clear, we have not reached Mysore yet. We have not crossed. We haven't done over speeding. So We are within speed. we are within the speed, right? So yes. Ubi wants to say something. Ubi, you want to say something? Say. हम लोग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं एंड राइट नाउ ये मैसूर रोड है. अभी भी 200 किलोमीटर के लगभग बाकी है एंड 7:30 इन द मॉर्निंग. तो बाकी बात बाद में करते हैं. अभी चलिए. सो मैसूर क्रॉस करके हम लोग निकल पड़े हैं वायनाड की तरफ. और जैसे ही आप मैसूर क्रॉस करके वायनाड की तरफ आगे बढ़ोगे तो रोड का नज़ारा तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है. Today I go with Whiska into see very big tiger. There is so many tiger. It comes from the house, back house outside. There is good because if tiger will come, they will eat now. That's why not shouting is allowed in there. We will not shout and we will only quiet and talk. Rock so slowly. Okay. Tiger, do you want to say something? Today we are going to see Today I am going to see my papa mama because there is tiger. So that is my papa mama. Yay! Are you happy now? Yeah. Say bye. Bye. See you tomorrow again. सो केरला का ये खूबसूरत रोड को फॉलो करते हुए हम चले हैं आज वयनाड के वाइल्ड लाइफ ट्रेजर को अनबॉक्स करने.
This is the first episode of this 3-night 4 days wildlife trip to Wayanad. We are heading towards Wayanad by road from Bangalore, and today we will check into a beautiful tree house inside tiger territory. Isn't it sound thrilling? Yes! तो चलिए आगे बढ़ते हैं. By the way, if you wish to travel via bus, many of them are available from Bangalore. It's around 12:45 now and we are almost there. The last part of this road is through Turahalli Forest Road. So you might get to see a lot of wild animals on your way as well. गूगल तो दिखा रहा है we have arrived, but समझ नहीं आ रहा है कहाँ है क्या है. Madam, jungle retreat right there. ये राइट साइड में है. Which car? ये दिस साइड इज कंप्लीट फॉरेस्ट है. Hi, Uvi. हाँ, this is all surrounded by forest और coffee plantation. What it is? ये राइट साइड I think ये राइट साइड ये है जंगल रिट्रीट. So this is the gate. तो रास्ते से आते ही आपका पूरा राइट में It's almost 1:30 and we have reached. This is our stay for tonight. ये है entry gate and entry gate से अंदर आते ही this is the parking area. वो साइड पूरा जंगल है और यहाँ पे है आपका रिसेप्शन. तो अभी बाकी पूरा गैंग तो चला गया, अभी हम लोग भी चलते हैं. चलिए जल्दी से चलते हैं एंड रिसेप्शन में जाके देखते हैं. हाँ, ये एंट्री का व्यू तो बहुत ही मतलब थ्रिलिंग है. देखना चाहेंगे? पूरा जंगल के अंदर है ये और ये है रिसेप्शन एरिया. वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. एंटर गैंग इज ऑलरेडी देयर एंड वेलकम ड्रिंक सर्व किया जा रहा है. हम लोग भी चलते हैं. हम लोग पहले बात कर लेते हैं तो कैसा लग रहा है. ऐसे दिखा है, देखिए फुल जंगल के इनसाइड एंड दैट साइड दिस ग्रीन वाला दिस साइड इज दैट जंगल. यहीं पे हम लोगों ने फोटो रिव्यूज़ में देखा था टाइगर लेपर्ड आने वाले का. देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस बार. आपके लिए वेलकम ड्रिंक है. ClickATale स्पेशल है. स्पेशल. अच्छा, सबके हाथ में ऑलरेडी. I'm done. Oh, you're done. What is this? Lemon. Lemon water. Okay. Lemon juice. lemon water na hai. Thank you, sir. Sir चाहिए? Tea. कांच का है. Thank you. कांच का है. It's yummy, na? Touching anything, take permission. We have reached here around 1 or 1:30 and it's 2. So हम लोग पहले we are finishing our lunch and then we will go to our room, check into our room. And here are multiple stay options you will get here, like this one. This is a jungle cottage. जो हम लोग next video में आपको दिखाने वाले हैं. We are going to stay here tomorrow and day after tomorrow, but today we are going to stay inside the forest. We are going to stay in a tree house. तो वो हम लोग पहले फटाक से लंच करते हैं और फिर बाहर जाते हैं और दिखाते हैं आपको वो व्यू. कम. So food here is not included into the stay package, so you have to pay extra for the food, but you will get all the options. वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और वैरायटीज भी बहुत है. So अभी हम लोग रेडी हो गए. We are going to the tree house. तेजस सर मैं सामने हूँ. मनु सर हमें लेके जाएंगे. और ये रहा पीछे अपना पलटन. So if you are coming by your own car, you have to park the car into this reception, and उसके बाद आप ये 4x4 जीप करके आपको जाना पड़ेगा. What is the speciality of this tree house? Tree house, sir. I mean, you can see the animals from the room, and it's surrounded by the jungle. So if you are staying in the top itself, you can see the animals around, and there is a waterfall nearby the tree house, so you can see the animals from the tree house.
and there is a watchtower, so you can go and sit the watchtower in the evening time. And there are only 2 tree houses, and there is no other human beings are there. And this is gonna be extremely thrilling, huh? Only two tree house जहाँ पे सिर्फ हम दोनों फैमिली रहेंगे. This is हाथी एंड टाइगर का चलने का रास्ता है ये. वो स्लीप होके हाथी एंड टाइगर जाता है यहाँ से. माय गॉड. कब? Yesterday night का मैडम. Yesterday night यहाँ से क्रॉस हुआ है. भाई ये तो खतरनाक होने वाला है आज का. वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए. So the better visibility to somebody who drives. There is actually coming lot of accidents. Like people won't even see the animals standing. All of a sudden. So they are collecting a root basically, and they're selling to the markets. That root there, that the lady is collecting, no madam. They're collecting a root and they're selling. Okay. That's a Ayurveda herbal. And they will sell to the local tribal society here, and they get some 30 rupees per kg. So this is the road, man. Look at the road. ये अपने आप में एक सफारी है, हाँ, इसमें जाना. उनका कैमरा ट्रैप. वो जो कैमरा ट्रैप है. You saw the tiger from this camera. This is watching you. Be careful. No talking. See, he's checking for the pug marks. सर ये रास्ता से टाइगर और एलिफेंट्स बहुत आते हैं और हाथी भी रोड क्रॉस बहुत करते हैं सर. तो हमको भी कभी कभार चेक करना पड़ता है. ये डे टाइम में कि नाइट टाइम में? Any time. मतलब ज़्यादा से डे में आते हैं सर, और नाइट में 6:30 to 10 o'clock तक आते हैं सर सबसे ज़्यादा. 6:30 to 10. हाँ, 6:30 to 10. अभी तो दोस्त भी बन चुके हैं. अच्छा. टाइगर तुम्हारा दोस्त हाथी का. ओके. हाथी पग मार्क मिला. ये मेरे लिए. अभी आया है. मॉर्निंग. तो वो पीछे जो गया ना अभी, वो बोल के गए कि टाइगर अब फ्रेंड बन गया है आपका, आप लोगों को पहचानता है वो. So actually, I told you, we actually calling a tiger. We call Snow White. I mean, we're not sure whether she is actually recognizing or not. Okay. But we started seeing her when she was this small. And she grew up in this area, and she was more active the time when it was COVID time. Okay. So she felt very comfortable when she come to the road. That time there is no traffic. No traffic. So even after the COVID time also she felt it is very comfortable. So this particular tiger, she comes sit next to the road. Oh. So the reason why, the reason why we call her Snow White, on the stomach she have a very proper S kind of a mark, like a letter S. Oh my. So that's why we call her Snow White. And she have 2 cubs now. And she is actually 8 plus 10, almost 9-year-old. So getting old. Yeah, but so she's very active in this area. Snow White. Local people, everyone knows Snow White. Yeah, she's quite famous. But it's good that COVID gave her back to. Yeah. And that was the best time, by the way. Sadistic way I can say, but again, that was really true. Yeah. बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है. और ये मनु सर ने जो स्टोरी बताया स्नो वाइट के बारे में, लेट्स सी इफ वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू स्पॉट हर. So I think ये वीडियो में तेजस का काफ़ी बात आप लोगों को सुनने को मिलेगा. Just because I'm sitting like next to Shivash, I'm interrupting. No, absolutely. He has done a lot of research. Spotted deer में भी.
Where is that? अंदर चला गया? ज़्यादा है डियर तो ज़्यादा है. चलो मेरे साइड में तो दिखा नहीं, बट दैट साइड एकदम पास में से स्पॉटेड डियर था. Now we have to walk. I'm literally scared. तेजस क्या हाल है आपका? पता नहीं, देखो यहाँ से रास्ता तो दिख नहीं रहा है, कहाँ जाना है. वो भाई उतर के निकल गए. टाइगर ऐसे खोज रहे हैं जैसे बकरी खोज रहे हैं. Keep quiet. ये रोड. Keep quiet. उधर वाटर बॉडी भी है क्या? छोटा है. छोटा वाटर बॉडी है. अच्छा, उसी के नीचे वो लेपर्ड का वो वीडियो दिख रहा था जो पानी पीने आता है, छोटा सा. हाँ, उसके नीचे भी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे. इधर पूरा कैमरा नीचे पूरा. स्टाफ रूम इधर ही है और कॉर्नर में. अच्छा, बहुत दूर है फिर भी इसको फोन में. नहीं हमारा फ़ोन तो नहीं चलेगा. जियो तो चलेगा. जियो चलेगा. एयरटेल को इधर बिल्कुल बिल्कुल नहीं. ये फॉरेस्ट का बाउंड्री है. वो सब देख रहे हैं ना, सब फॉरेस्ट है. हमारा प्रॉपर्टी इस तरह था. ये पूरा हमारा प्रॉपर्टी है. तो पहले कॉफ़ी प्लांटेशन था. हम लोग कॉफ़ी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया. इसलिए जंगल बर्ड दिया. Okay. Because the moment you start getting people here and they'll lot of human activity have, they'll come and harvest, they'll do some work. Then animal movement come over. They won't come. Yeah. ये एक है, वो एक है, ऐसे ही दो है. तो इस एपिसोड में इतना ही. हम पहुंच चुके हैं जंगल रिट्रीट के ट्री हाउस में, जो कि टाइगर टेरिटरी के अंदर है. We'll share all the details of this stay in our next video, so stay tuned and we'll come back on next Tuesday. तब तक के लिए I'm Dipmala I am Shivash. and we are signing off for now. Stay safe Be happy. and travel more.